Welcome all, welcome all. हेलो अंशु, हेलो करण। बहुत दिनों बाद लाइव आए हो सर, आप कैसे हो? आई एम वेरी फाइन बेटा, आई एम वेरी फाइन। हाउ आर यू ऑल बेटा? ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज कंफर्म मी। ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट राइट यस इन कमेंट सेक्शन बेटा, एवरीवन। क्लियर, ओके बेटा। नो इको? ओके। So welcome all beta. Today I am very happy to launch another beautiful mind-blowing lecture series on YouTube, Engineering Mathematics. As you all know, this is Gaurav Srivastav Sir, Educator Head, Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute with 11 plus years of teaching experience. And now beta, today I am going to start Engineering Mathematics as per your demand. In this lecture series beta, the full syllabus of mathematics of Gate I will discuss. And first सर आप मैथ्स के पूरे चैप्टर? यस बेटा, फुल चैप्टर्स बट वन बाय वन। दिस टाइम आई एम लॉन्चिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, न्यूमेरिकल मेथड्स एज चैप्टर नंबर वन। Numerical methods as chapter number 1. Okay, and I will try to complete this numerical method series in next 6 to 7 days max. After that I will launch second chapter. Okay beta, and after completing each chapter you all will be capable to solve each and every problem of any branch, not only chemical engineering branch, mechanical, civil, any branch, question relating numerical methods chapter. So this will be your homework too. After every chapter completion I will give you a few days gap. Okay, and this lecture series main language is English beta. I will discuss everything in English language, but Hindi learners, don't worry. If you feel any doubt, you can ask your doubt in your own language. यानी कि आप हमसे हिंदी में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो. And you can also ask me to revise solution or concepts again in Hindi language if you are unable to receive what I want to say you. Okay, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता you can ask, but first you can ask only after completion of that respective topic or that respective numerical. Okay, then you can ask me to revise it again, repeat again it again in Hindi language. Okay beta, you're all welcome beta, you're all welcome. You all will enjoy a lot beta, बहुत मजा आने वाला है everyone. So this is full chapter of GATE, that is Graduate Aptitude Test in Engineering. Okay, so linear algebra, and chapter 2, that is calculus, differential equation, complex variables, probability and statics, and finally numerical methods. But today I am starting first chapter as numerical methods because this chapter is very very important for GATE, and also this is a very very small chapter too. Okay, reference books you can take Higher Engineering Mathematics by B.S. Grewal or my books, but no need to see any book. Just complete my lecture series and also complete my homework. I will give you homework after completing each lecture. That means आप हर एक lecture के completion के बाद आपको homework मिलेगा from my side. Okay, with answer. This lecture series is very very beneficial for GATE, IFS, BTech, interview and knowledge purpose too. And here you will feel every numerical with crystal clear concept beta. Here I am going to cover full syllabus of engineering mathematics. My YouTube channel name is Gaurav Srivastav Sir Gate Chemic. If not subscribed, please subscribe it immediately. And on Telegram, one channel is there and one discussion group is there beta. And if you are unable to search these channels, you can ask me on WhatsApp
I will provide you links there. Okay. And also, beta, don't forget to like my Facebook page. And after seeing this lecture series of numerical methods, just write your actual feeling there as comments. Okay. I'm also on Instagram and Twitter, but still I'm not too much active on these platforms due to very less time. Okay. So this lecture is copyrighted to Gaurav Srivastav, so that's me only. So, without any delay, I'm going to start lecture number one, numerical methods number part one. And in this lecture, I am going to discuss system of linear equations. I am going to complete this system of linear equations topic in two lectures. One today and second one tomorrow. There is no gap. There is no gap in this lecture series. That means I am here every day till the completion of this numerical method chapter. Timing is same every day. I am here at 9:30 p.m. So without any prior notification, if you are unable to see any notification in app or anywhere, come directly to YouTube and see me 9:30 p.m. live with this beautiful lecture series. Okay, that means no confusion that sir come aayenge, when will sir come? Every day 9:30 p.m. till the completion of this lecture series of numerical. Okay, beta. So I am going to start chapter number one with full josh, and I hope you all will also feel real mathematics here. Okay, so topic. Chapter number one, numerical methods. What topics I am going to cover here? So first, the main topic is system of linear equations. The first topic is system of linear equations. In this chapter, beta, in this subchapter, I will discuss Gauss-Elimination method, Gauss-Jordan method, iterative methods, and I will also tell you in gate examination what part they can ask you. And also that this lecture series, as I already told you that this lecture series is beneficial for your BTech college semesters too. Okay, very happy good evening beta Rishi. And after completion of system of linear equations, second chapter should be algebraic solution of algebraic and wait, second chapter, very important chapter beta, solution of algebraic and transcendental equations. I know you all know what is algebraic equation. A few of you I feel don't know about transcendental equations. So beta, these are equations having polynomials, trigonometric functions, logarithmic functions, etc. These are known as transcendental equations. Okay, and after completion of this subchapter, your third chapter will be numerical integration. In the second subchapter, I will discuss Newton-Raphson method, regular falsi, secant, etc. These will be discussed in subchapter number 2. Okay. Yeah, beta Rishikesh, this is my first slide. Okay, दिस इज फर्स्ट स्लाइड जहां आपको हम पढ़ा रहे हैं. इसके पहले केवल जस्ट इंट्रोडक्शन, यू मिस्ड जस्ट इंट्रोडक्शन. ओके, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा मुकुल. सो थर्ड चैप्टर numerical methods. This is very important. Numerical methods, you know about numerical methods. Ranza-Katta method, first order, second order, fourth order, Euler's implict, explict. I will discuss each method here with full filling beta. कभी नहीं भूलोगे. It's my guarantee. Okay. And after completion of this numerical methods, in numerical methods I will discuss Simpson and trapezoidal methods, and in chapter number 4, that is solution of ordinary differential equations, solution of
ordinary differential equations. Here I will discuss beta Ranza-Kutta method, Euler implicit, explicit, etc. Okay. After completing these four subchapters, your chapter number 1, numerical methods, will complete. Okay, and this chapter, out of all chapters beta, this chapter is very 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 important. Okay, and when I teach this chapter beta, uh, few terms of matrix is important. Okay, so don't worry, matrix I will teach you later, but don't worry, I will discuss those topics before main topic. Okay, so are you all ready to start first topic, that is system of linear equations beta? Everyone please tell me with full josh, क्या आप सभी लोग तैयार हो बेटा? Everyone, shall we move forward? Come on everyone beta, shall we move forward? Very happy good evening beta. Concept of chemical engineering. Okay prince, okay. So beta, system of linear equations. System of linear equations. Here I will discuss four important methods. Okay, so method number 1, Gauss elimination method. Gauss. And also beta, my English vocab is very very small, so हिंदी लर्नर्स विल ऑल्सो कंफर्टेबल इन दिस लेक्चर सीरीज. आप अगर हिंदी लर्नर हैं तब भी आपको कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा कि आपके समझ में ना आए. ओके, बहुत ही फ्रेंडली इंग्लिश होगी. ओके, सो चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 1 शुड बी हियर गॉस एलिमिनेशन. गॉस एलिमिनेशन मेथड. सेकेंड मेथड गॉस. नमस्ते बेटा वैभव, हाउ आर यू वैभव, कैसे हैं आप वैभव जी? गॉस जॉर्डन मेथड. वेरी वेरी गुड बेटा, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन बेटा. हेलो मनोज, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा. अनिल. And third, very important beta, that is Gauss-Seidal method. In your examination they can ask you mainly problems from Gauss-Seidal and Gauss-Jacobs method. Gauss-Jacobs method. And from first and second they can ask you some theoretical correct incorrect sentence type questions, but I will discuss here complete Gauss elimination method, Gauss-Jordan, Gauss-Seidal, Gauss-Jacobs method in just 2 lecture, one today and second one tomorrow 9:30 p.m. Okay beta, so now I'm going to start first topic, that is Gauss elimination method. No need to write this theory. Okay, no need to write this theory. Okay, I attached this slide only. Just learn, just read it, not learn, just read it after completion of Gauss elimination method. मतलब अभी नहीं पढ़ना है इसको, पढ़ना कब पढ़ोगे? जब ये मेथड हम पढ़ा देंगे आपको. देन इसमें देखना कि सर ने जो जो आगे किया, यू कैन सी ऑल थिंग्स हियर ऑलरेडी रिटन बाय मी. ओके, यही हम करने वाले हैं जो यहाँ आप लिखे हैं, यहाँ जो आप पढ़ रहे हो. ठीक है, बट अभी आपके लिए हम पढ़ देते हैं इसे. ओके, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड. इन दिस मेथड first I will consider an augmented matrix of type A is to B such that B of the system of equations AX equals to B. नहीं समझ रहे? No need to worry, अभी सब कुछ समझाएंगे step by step. I will teach you this method step by step. Okay, in next just 10 to 15 minutes beta. Okay, now in second step I am going to reduce that augmented matrix to an upper triangular matrix. In matrix chapter, this form is known as echelon form. No need to worry, no need to write. When I teach you matrix chapter, then write there. Okay. And for Gauss elimination method, we have two methods also. Here, this is also can be solved by two methods.
One method without partial pivoting, second method with partial pivoting. First thing you must know beta, what is pivot element? If I teach you matrix chapter, listen carefully beta. If I teach you matrix chapter, then first element of any matrix is known as pivot element. Wait beta. One more thing beta, in this chapter you will always get a square matrix. These are rows. This is row number 1. These are elements. This is row number 2. This is row number 3. This is column number 1. This is column number 2. This is column number 3. If number of rows becomes equals to number of columns, then that type of matrix is known as a square matrix. And in this chapter, you will see only and only a square matrix. What does it mean, upper triangular matrix? That means if I am going to separate upper triangle, this this is my upper triangle, then remaining elements, this, these all must be 0. So this is known as upper triangular matrix and also known as echelon form. This is also known as echelon form of a matrix. Okay, in Gauss elimination method, I am going to first I am going to write augmented matrix. How? I will show you just after 1 or 2 minutes beta. Okay, and in matrix chapter only this first element is known as pivot element. Okay, but in this numerical methods chapter all diagonal elements are known as pivot elements. This is main difference between that matrix chapter and this numerical methods chapter. Okay, so in this numerical methods chapter all the diagonal elements are pivot elements. What is partial pivoting? It is the first stage of elimination. In this method, I am going to search the largest element in the first column. So this is my first column. Here, first, I am going to search largest element. And beta largest, see, -7 and 3. Which one is largest? आप कहोगे, sir, 3 is largest. But beta here, you just search largest in magnitude only. So here its magnitude is 7 na beta, its magnitude is 7, so this is larger than this 3. Okay, in magnitude. In this method you just search largest element in magnitude only. Okay, and after that we are going to change that row with another row and I will continue this process. So this theory part is a little bit confusion. इसमें बहुत confusion आपको अभी आएगा. If you are going to read this theory, then you feel confusion. But after applying this, that means after applying or after solving a problem with partial pivoting, then after that read again this 4 line, you will feel what I want to tell you. Okay beta, so without any delay I am going to start beautiful problem number 1 today. Here I am going to solve this set of equations and by Gauss elimination method, first without partial pivoting and second one with partial pivoting. But with when you are going to solve any problem with or by applying partial pivoting, one difficulty you face, finally you will get equations in fractional form, and to solve those type equations it's little bit time consuming. So first choice is always without partial pivoting. Okay, so how I am going to solve? See here beta, it's very easy. It's very easy. Okay, so now I'm going to solve this by using Gauss elimination method. Here 3 equations beta, x, y, z, and 3 unknowns. Unknowns are x,
y, and z. These three are unknowns here. Listen carefully, beta. Okay, these three are unknowns. If these three are unknowns, so definitely you need three number of equations, three number of unknowns. Okay, that means square matrix. Okay, now augmented matrix. First, I'm going to write coefficient matrix. So coefficient of this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3, beta. Here coefficient of x is 1, coefficient of y is 4. In equation 1, coefficient of z is -2. In equation number 2, beta, coefficient of x is 4, coefficient of y is 1, coefficient of z is 1. In equation number 3, coefficient of x is 3, coefficient of y is 2, coefficient of z is -4. So बेटा इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे. आई एम गोइंग टू फॉर्म वन ब्यूटीफुल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि सबका हम यहाँ कोफिशिएंट लिखेंगे तो वह मैट्रिक्स कहलाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो दिस इज माय कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सी बेटा, very easy method, you never forget beta. Okay, so 1, second term is 4, and third -2. Here 4x, that means 4, y means 1, z means 1, 3x, that means 3, 2y, that means 2, -4z, that means -4. So beta, this is known as coefficient matrix. This is known as coefficient matrix. I am writing here, don't worry beta. This is known as coefficient matrix. Coefficient matrix. Okay, now if I am going to write RHS of these equations with this matrix, then that type of matrix is known as augmented matrix. अगर हम इसके साथ RHS यानी कि 4 4 6 को भी लिख दें तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे बेटा augmented matrix. So here I am going to write 4, this is this beta, this. Okay, so 4 4 and 6, 4 4 and 6. Now this whole is known as what beta? अब इस पूरे को क्या बोलोगे आप? This whole is known as what? This is known as augmented matrix. Augmented matrix. Okay, now see. Consider an augmented matrix A is to B. This A is what beta? These are coefficients. And what is this beta? This is RHS of those equations, that is your B. And equations AX equals to B. What is this X? This X, so X, Y, Z. If only two unknowns, then only X, Y. If four unknowns, then you can say PQRS, anything. Okay. Now see here. So this is my step number 1 beta. This is my step number 1. I already completed. Okay, so this is my step number 1. Just write augmented matrix. So now I am going to solve this first without using partial pivoting, and second with partial pivoting. Okay, so A, without partial pivoting. One thing you must clear beta, while solving any equations, never use column operations. Always, please note down this beta, always use only row operation. That means आप हमेशा क्या करने वाले हो? You are going to subtract or add rows only. कॉलम को कभी यूज नहीं करोगे, नहीं तो सब x का y, y का z आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और इक्वेशन आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा और लास्ट में आंसर भी नहीं मिलेगा अगर आपने x को y के प्लेस पे रख दिया, y को x के प्लेस पे रख दिया. इन दैट केस, सो ऑलवेज यूज ओनली रो ऑपरेशंस. इफ यू आर गोइंग टू यूज कॉलम ऑपरेशंस, then it is wrong for you. Okay, so always use only and only row operation. So first I am going to discuss here beta without
partial pivoting. It's very, very, very easy. I want to reduce that augmented matrix. In which form, beta? In this form. Here anything, 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 anything. Here also anything, anything, anything. Maybe zero anywhere. Okay. And here this term, this term, this term must be zero. And one more thing, beta. If you are going to solve any equation, if you are going to solve any equation by using Gauss elimination method and obtain zero here too, then just write the above system of linear equations having no solution. Having no solution. So this term must be non-zero. So these three I am going to convert these three elements to zero by using row transformation, by using row operations. Okay, so with the help of that step number one, I am showing again beta here. This is my equation I am going to solve with the help of Gauss elimination method, and I will use Gauss elimination, Gauss-Jordan, Gauss-Seidal, Gauss-Jacobs one by one, each and every method beta. Okay, so in this method, just first I am write augmented matrix here, and this augmented matrix just I am this is your step number 2. So in step number 2, without partial pivoting, so first I am going to write augmented matrix from that step number 1. 1 4 minus 2, 1 4 minus 2, and 4 double 1, it's 4, it's 1, it's 1, and 3 2 minus 4, it's 3, it's 2, it's minus 4, and here 4 4 6, 4 4 6. Okay, now I am going to use few row operations. 2, if I want to 0 this term, then how is that possible? It's very, very easy. If I am going to use, in place of R2, if I am going to subtract 4 times of R1, 4 times of R1 from this R2, if I am going to subtract 4 times of R1 from this R2, then beta this 4 will be 0, this 4 become 0. Similarly, if I want to become 0 this element 3, it's very easy. This is what? This is row number 3 now. This is row 1, this is row 2, this is row 3 now. So just I can write in place of row 3 R3 minus 3 R1. But the row which you want to the element of any row, जिस रो के एलिमेंट को आप चाहते हो जीरो करना, नेवर मल्टीप्लाई एनीथिंग विथ दैट रो. उस रो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे. यू कैन सी हियर बेटा R2 इज स्टिल R2, R3 इज स्टिल R3. Okay, for simplicity. Okay, now see here beta, now see, after using this operation, what will we get? So R1 is still R1, so it's 1 4 minus 2, and here it's 4. R2 minus 4 times, so 4 minus 1 into 4, that means here it's 0, and 1 minus 4 times of 4, that means 16, it will come minus 15, and 1 minus 4 times of 2, minus 2 is minus 8, so minus minus become plus, and 8 plus 1 will give you 9, and 4 minus 4 times of 4, so 4 times of 4 will be 16, 4 minus 16, it will come minus 12 here. Okay, now R3 minus 3 R1, so R3, this is your R3 and this is your R1, so 3 minus 3 into 1, it will give you 0, and 2 minus 4 into 3, you can see 2 R3 minus 3 into 4, so 4 3 are 12, 2 minus 12, it will give you it will give you
minus 10. 2 minus 12, it will give you minus 10. It's very easy, beta. Now, uh, with this topic in your GATE examination, they can give you system of linear equations. After that, they can ask you which one of the following is the echelon form of Gauss elimination method. सो आपको ऐसे रेड्यूस करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि फॉर द गिवन इक्वेशन विच वन इज करेक्ट एक्लन फॉर्म ऑफ और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो इस तरह के क्वेश्चन आपके गॉस एलिमिनेशन से बन सकते हैं इन गेट एग्जामिनेशन. ओके बेटा, by using this method they are not going to ask you what is the value of x, what is the value of y, what is the value of z. Okay, because x y z trial and error आपको मिल जाएगा आंसर. Okay, so Sailesh Kumar Gupta told me answer, sir, x equals to 8 by 5. Wait beta, I'm checking. Beta, x is not 8 by 5, x is 1, y is 1 by 2. No beta, your answer is not correct. Your answer is not correct beta Sailesh. Okay, no need to worry. See here beta. सो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आई होप आप समझ गए होंगे. जो एक्लन फॉर्म में हम यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू किस मेथड में पूछेगा, दैट मेथड इज गॉस-सीडल मेथड. दे कैन आस्क यू आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, आफ्टर सेकंड इटरेशन, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ y, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ z, आफ्टर थर्ड इटरेशन, मैक्सिमम 3 इटरेशन दे कैन आस्क यू. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी 2 इज ऑल्सो ओके. 2 से ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, मैक्सिमम 3 इटरेशंस in Gauss-Seidel method. In that method they can ask you x y z value, but in this method they can ask you, first they will give you set of equations, after that they will ask you which one of the following is right echelon form if we are going to solve the above equations by using Gauss elimination method. Now by Gauss elimination method, with partial pivoting or without partial pivoting, in these two different methods the echelon form you will get different. By using partial pivoting you will get elements in fractional form. Okay beta. Anil told me, sir, x equals to 1. Very good beta. Y equals to 1 by 2. Very good beta. Z equals to 1 by 10. No beta, z is not minus 1 by 10. Okay, you can also check by putting these values. Okay, equation will not satisfy. Okay beta Anil. So now third term here, minus 4 and minus 3 times of minus 2, it will come 2. And here 6 minus 4 into 3, 12. 6 minus 12, it will give you minus 6. So this is my first step. But this is not my upper triangular matrix. This is not my upper triangular matrix beta. Why not upper triangular matrix? One term is still not 0. If one term is still not 0, that means now second row operation, here you are going to convert this minus 10 to 0. So now the question is how. अब इसे कैसे करेंगे? Okay, अभी देखते हैं कैसे करेंगे. In next slide, this augmented matrix can also be written as, if I am going to use few more row operations, like if I am going to write R2 by minus 3, z is minus 1 by 2. अनिल ने दोबारा सॉल्व किया है, एक मिनट बेटा. Now you are correct beta, absolutely correct beta. And also I am going to use this row transformation. In place of R3 I am going to write R3 by minus 2. Now you can see here what will we get. First row 1 4 minus 2, 1 4 minus 2, and here 4. Shailesh, sir, got it. X equals to 1, y equals to इतना, z equals to minus 1 by 2. सर कैलकुलेशन मिस्टेक, नो नीड टू वरी बेटा. आगे से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने का, आराम से क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाते हैं एग्जामिनेशन में भी. ठीक है. Accuracy is more important than your speed. You know na, for under 100 rank, on an average you need just more than 65 marks on an average. In few years maybe 68 69 marks, but on an average it's 60 or 65 marks. Okay, for a very good rank in GATE examination. So you need not to solve all 100, you need not to attempt all 100. तो जो नहीं आता उस पर समय देके क्यों टाइम को लॉस करें, और अगर हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें.
तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हिट करेंगे, वो तो हमारा गलत नहीं होगा ना बेटा। तो एक्यूरेसी पे आप खास ध्यान देंगे। ओके बेटा। एंड नाउ इन प्लेस ऑफ R2 बाई -3, इसे बस शॉर्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको रो ऑपरेशन में और आसानी होगा, इजी पड़ेगा आपको। ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट R2 by -3, so -15 will -15, so it will convert into positive, and 9 will be now negative, and -12 will be now positive. So 15 by -3, -15 by -3, it is now 5, and 0 by something will give you again 0 na, and 9 by -3 it will give you -3, and -12 by -3 it will give you 4. Okay beta. Now R3 by -2, so -5 by -2, it will give you again 5, and 2 by -2, here -1, and -6 by -2, it will give you 3. Now you can see beta here. Now you can see, after using this row transformation, after using this beautiful row transformation, now I can apply another row operation. If I want to convert this 5 to 0, and that operation I know, everyone know beta, that operation, can you tell me in comment section beta, उस ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? I know everyone know, just R3 minus R2, subtract R2 from R3. So in this case, first row is still same, second row is still same, and 0 minus 0 will give you 0. 5 minus 5 will give you 0. Minus 1 minus 3. So minus 3 plus 3. That means this is now 2. And 3 minus 4 will give you minus 1. Now completed beta. So this is our required echelon form. This is, now you can see, in upper triangular form. This is, now you can see, upper triangular matrix. This is upper triangular matrix. अब सॉल्व कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। सो हम इसी पेज पे सॉल्व कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। सो हियर एक्स, एक बार हम फाइनल मैट्रिक्स को मिला भी लें अपने सॉल्यूशन से, कि रास्ते में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ओके, सेम इक्वेशन। सो एक्स प्लस 4y by using this coefficient matrix minus 2z equals to 4. Second equation, 5y minus 3z equals to 4. And third equation, 2z equals to minus 1. But they will not going to ask you value of x, y, z by using Gauss-Elimination method. This is your required answer in your GATE examination. Okay, now you can see beta. And also I know आपको ये समझ में आ गया होगा why you want to convert in upper triangular form. Now by using equation number 3, you can see z is minus 1 by 2, and if you are going to put z equals to minus 1 by 2 here, so by using this equation you will get y, and the value of y is 1 by 2, and now I am going to put y and z in this equation number 1, and after solving it will give you x equals to 1. Okay, so the required solution is x, y, z, and that equals to 1 comma 1 by 2 comma minus 1 by 2. बेटा प्लीज टेल मी एवरीवन, आप सभी को समझ आया, मजा आया कि नहीं आया, इजी लगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन से डर तो नहीं लगा ना? इजी है, वेरी इजी ना? आई विल गिव यू होमवर्क टू बेटा। होमवर्क में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन देंगे, सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? सो नाउ कैन आई सॉल्व दिस सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग? कैन यू टेल मी बेटा, क्या इसे हम पार्शियल पाइवोटिंग से अब सॉल्व करें? चलो, वेरी गुड।
समझ में आता है तो थोड़ा दिल विल भेजने का, दिल से दिल मिलाने का। चलो अब इधर देखने का बी वाला पार्ट। सो बी पार्ट, बाई पार्शियल पाइवोटिंग, बाई partial pivoting. This is also beneficial if you are in your college semester, मैथमेटिक्स अभी आपके है तो वहाँ भी आपको ये पूरा हेल्प करेगा, बिकॉज यू नो ना, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको पूरा पढ़ाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, जबकि टॉपिक के लिए समय भी बहुत कम लगता है और जल्दीबाजी भी आपको नहीं दिखेगी। सो मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल मेथड्स चैप्टर है, इट विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट फ्यू डेज ओनली एंड विथ फुल फीलिंग एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेटा। बट वन थिंग, अगर आपको अच्छे से सीखना है बेटा, कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे, अटेंड एवरी लेक्चर, ट्राई टू अटेंड लाइव एवरी लेक्चर, एंड ऑल्सो बेटा डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट होमवर्क, रोज का रोज होमवर्क कंप्लीट करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। ओके, नाउ बाय पार्शियल पाइवोटिंग I am going to solve same equation by using partial pivoting. So first, in this method also, step number 1 is write augmented matrix. So what is my augmented matrix? 1 4 minus 2 4, 1 4 1 4 minus 2 4 minus 2 4, 4 1 1 4, 4 1 1 4, and next 3 2 minus 4 6, 3 2 minus 4 6, 3 2 minus 4 6. Beautiful. Now beta, in partial pivoting, you remember step number 1 I told you earlier? Step number 1 क्या था, जरा देखो तो। See, search the largest element in the first column. I think in my first column the largest element is this 4. This is my largest element present in my matrix, augmented matrix. Now see, in magnitude and brought as the first pivot, इसको फर्स्ट पाइवट पे ले जाएंगे, मतलब उसको लार्जेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, ऑल डायगोनल आर पाइवट पॉइंट, एंड पाइवट पॉइंट को हम क्या बनाने वाले हैं, लार्जेस्ट। आई एम गोइंग टू मेक all pivot elements as largest element of that respective column. Column, सीधा सीधा, this is column. Okay, this is column. Okay, how? By interchanging that row having the largest in magnitude to the first row and continue this process. अभी ये लाइन नहीं समझ आ रही होगी, नो नीड टू वरी, देखो अभी समझाते हैं। शैलेश कुमार गुप्ता जी पूछते हैं, सर गेट में जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ सब्जेक्ट में हुए हैं पिछले और इस साल, उसको कवर कर देते आप, लाइक सीआरई में एमएम इक्वेशंस एक्सेट्रा। ओके बेटा, नो नीड टू वरी, वो अभी आपको हम करा देंगे। एक मिनट बेटा, इंपॉर्टेंट कॉल है, मेरे पापा भी बाहर गए हुए हैं, वहां से वो कॉल करे, बता दें उन्हें हम लाइव क्लास में हैं। हेलो, लाइव क्लास में हैं, अभी कॉल करते हैं। हाँ ठीक बाबा, ओके, सो डोंट, नो नीड टू वरी बेटा शैलेश। Now, and also beta, I already covered that extra topic last year. आप देख सकते हो जो सीआरई कंप्लीट हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स के आसपास में, उसके अंदर इस टॉपिक के लिए ऑलरेडी हमने लगभग 2 फास्ट ट्रैक कराया है, लेकिन सब कुछ कराया। आप देख लो, उसी में से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। आप डेट देखना, एग्जाम की डेट के पहले कराए थे, और एग्जाम में जो आपको आया था इससे सेम वो ग्राफ हमने आपको पढ़ाया हुआ था, तो आप वहां से भी कवर कर ले सकते हो उसको। ठीक है शैलेश, ओके। Now see here, so this 4 is my largest element, ये हमारा 4 जो है ना, this 4, this is largest in my column number 1. Okay, and also one thing as I already told you बेटा, जिसको जीरो करना है उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। the term that I am going to become zero, I am going to convert zero, please don't multiply anything with that term. Okay, so in first step, the operation I am going to use, this is my row number 2, this is my row number 2. I am going to make 0 by using only row transformation again बेटा, यानी कि किसी भी मेथड में कभी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बातें नहीं करोगे।
Column transformation I will teach you in matrix chapter कि कहाँ क्या करते हैं. Okay, so R2 in place of R2, just write here R2. Why I am going to write just here R2? I can't write 1 by 4 R2. I can't write 1 by 4 R2. Why one not? I can't write 1 by 4 R2 because I want that 4. I want to convert that 4 to 0. That 4 to 0. So only one. एक मिनट रुको यार, ये मोबाइल में लेक्चर चल रहा था, अभी ये फ़ोन आया था तो चेंज हो गया. कमेंट्स वहीं से देख रहे थे ना आपके हम. जस्ट वेट few seconds. Okay, comment or started. Okay, so I can't multiply anything with this R2. इस R2 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो माइनस R1, नॉट R1. R2 में से अगर आप R1 को घटाओगे तो कहाँ आपका ये ज़ीरो होने वाला है? ये ज़ीरो होने वाला नहीं है. ये ज़ीरो होने वाला नहीं है. तो कैसे ज़ीरो करोगे इसे? हाउ? कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी? ऑपरेशन R2 माइनस हाउ मच R1? कैन यू टेल मी बेटा? टेल मी एवरीवन. क्या करने वाले हो यहाँ? आई एम वेटिंग. हाउ टू कन्वर्ट दिस 4 to 0? कैसे इसको 0 में कन्वर्ट करोगे? सोचो और सोच के बताओ. Pintu, Kumar and Anil told me that, sir, please use R2 minus 4 R1. Rishikesh told me that R2 minus R1 minus R3. बेटा R2 एंड R3 इन दो को कन्वर्ट करेंगे हम. ओके, एंड यहाँ R3 की बात नहीं है. यहाँ मेनली हमारा मकसद है R2 को कन्वर्ट करना. सो R2 को कैसे कन्वर्ट करोगे टू 0? सोचो और सोच के बताओ हमें. कोई और तरीका है? चलो करके दिखाओ जरा, सभी लोग करो. आई एम गिविंग यू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और 2 मिनट ले लो, 2 मिनट, एंड सॉल्व दिस एवरीवन बेटा, एंड टेल मी आंसर. Yes, Celeste told me, sir, first interchange the row R2 to R1 and then subtract R1 minus 4 R2. चलो भाई देखते हैं, करके दिखाओ. अगर लैंग्वेज समझ में आई थी आपको जो हमने लिखा था पीछे, फटाफट एवरीवन जल्दी करो. तब तक एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं. Shailesh, absolutely correct beta. First you are going to interchange R2 to R1. Very good. But beta, second you told me that subtract R1 minus 4 R2. So it is not na correct because you want 0 here na, not here. So if you are going to exchange these two, एक मिनट रुक जाओ, हम लिख ही देते हैं पूरा. आई एम गोइंग टू राइट ताकि आपको ये समझ में आ जाए पूरी तरह से. ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज in the first stage of elimination, in the first stage of elimination, as I already told you, here 4 is the
4 is the largest 4 is the largest element 4 is the largest element in the first column in the first कॉलम। ओके, और 4 कहाँ है बेटा? 4 आपका है R2 के अंदर में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंटरचेंज करोगे ना, देयरफॉर इंटरचेंजिंग, यहां देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा था हमने, सर्च द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम इन मैग्नीट्यूड एंड ब्रॉट एज द फर्स्ट पाइवट पॉइंट। इसे हम फर्स्ट पाइवट पॉइंट बनाएंगे। एंड पाइवट पॉइंट्स और व्हाट? दीज आर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स इट मस्ट बी in A11 place, here this place, it must be in this place. Okay, how? As the first pivot point by how? By interchanging that row having the largest element in magnitude to the first row। समझ में आ गया? अभी देखो ये थ्योरी जो लिखी थी आपको फील हो गई होगी बेटा। We are going to search the largest element in the first column in magnitude and brought as the first pivot point. How? How first pivot? By interchanging that row having the largest element in magnitude to the first row। समझ में आ गया? सेकंड का नहीं बेटा, ये आपका फाइनल जो आएगा ये आएगा 0 15/4 -9/4। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो अभी हम वापस से चेक कर लेंगे, लेकिन सही लग रहा है। एच जेड इक्वल टू 2/-4, या सही है, माई कैलकुलेशन इज राइट। ओके, वेट बेटा, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, हिंदी में भी आपको समझा देते हैं। हिंदी लर्नर्स, नो नीड टू वरी बेटा। जिस रो के अंदर में आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है उस रो को पहले चूज करेंगे और फिर उस रो को क्या करेंगे, उस रो को इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो से, हमेशा फर्स्ट रो से, फर्स्ट स्टेप। ओके, क्यों फर्स्ट रो से? वाई फर्स्ट रो? बिकॉज पाइवट डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल में फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ही आपका पाइवट कहलाएगा। और पाइवट इन पार्शियल पाइवटिंग, आई वांट ऑल पाइवट एलिमेंट्स लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम। हम उनके रेस्पेक्टिव कॉलम में उनको लार्जेस्ट बनाना चाहते हैं। ओके बेटा, हेलो बेटा ऋषिकेश कोल्हापुरे, थोड़ा सा लेट हो गए आप, नो नीड टू वरी, रिकॉर्डिंग इसकी आ जाएगी। इस लेक्चर को अभी प्राइवेट ये नहीं होगा, सो आप आराम से देख लेना, बट आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स मे बिकम प्राइवेट जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइव लेक्चर। तो कोशिश करेंगे बेटा लाइव ज्वाइन करने का। लाइव में चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ भी आपका बचा नहीं रहता, आप एक्यूमुलेट नहीं करते हो। तो अभी मैथमेटिक्स पूरी लाइव चल रही है, फटाफट मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स अपने कंप्लीट कर ले जाओ, ठीक है। नो, so after using this transformation, this become 4 1 1 4 4 1 1 4 एंड इसको इंटरचेंज किससे किया? फर्स्ट से। सो यर 1 4 -2 4 and 3 2 -4 6। now you can see beta, is it crystal clear to all of you beta? फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया? टेल मी बेटा एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? बोलो 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 भाई, सभी को क्लियर है ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आफ्टर यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस 4 is now at this is now a pivot element and largest. Very good. In this second one, this is already largest. In third one, this is already largest in magnitude only. आपको largest देखना है in terms of magnitude. That means completed. Partial pivoting is completed. Yes beta, yes Salesh, absolutely correct. After using this, now आपको जीरो किसे किसे करना है? this and this, these three you want to become zero।
या इन तीनों को जीरो करने का है। आफ्टर पार्शियल पाइवटिंग इन तीनों को क्या करने का है, जीरो। तो अभी जीरो कैसे करोगे, नाउ यू कैन सी इन प्लेस ऑफ R2, in place of R2, in place of this R2, I am going to write R2 minus 1 by 4 of R1. So next operation, in place of R2, I am going to write R2 minus 1 by 4 of R1. बिल्कुल सही आपने बताया बेटा। And second operation, in place of R3, I can write R3 minus 3 by 4. R3 minus 3 by 4 of R1. ये देखो कैसे किया, 3 by 4 of R1, दिस इज योर R3 एंड 3 by 4 of R1, इसका 3 by 4 कर देंगे, इसका क्या करेंगे 3 by 4, तो ये 3 3। नाउ सी बेटा, अभी ये जो आपने डायगोनल में देखा है ना, यस बेटा शैलेश, वेट अभी आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं, नो नीड टू वरी बेटा, जस्ट सी बेटा, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन आप देख रहे हो कि ये सारे आपके हैं भले लार्जेस्ट, बट अभी आप नहीं देख सकते हो, अभी आप फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन में हो बेटा, यू आर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन। अभी तो डायगोनल आपको पता ही नहीं ना कि डायगोनल का क्या होने वाला है, यू डोंट नो ना, ओके, यू डोंट नो कि डायगोनल अभी लार्जेस्ट होने वाला है आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन और नॉट। So after first stage of elimination, first you are going to interchange. After that interchange, make other elements, convert other elements to zero. इसे जीरो में कन्वर्ट करेंगे। After converting, now again see in second column. Then after again converting this to zero, check in third one. So this is your procedure beta. So now after completing this interchanging term, now 1 and 3 must be 0 there before second stage of elimination. These two must be 0. Is it crystal clear beta? अभी समझ आ गया ना? Is it crystal clear? So I want 0 here and here, that's why I am going to operate this like R2 minus 1 by 4 of R1. So 1 minus 1 by 4 of 4, 1 minus 1, 0. 3 minus 3 by 4, तो 3 by 4 into 4, it's 3, 3 minus 3, 0. Yes sir, very good, very good. So बेटा इस ऑपरेशन को करने के बाद से आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पे अटेंशन हियर बेटा, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। सो 4 1 1 4, ये तो सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इट्स 4 1 1 4, बट हियर आफ्टर कन्वर्टिंग यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपका 15 हो जाएगा, आप सभी लोग मैच करेंगे बेटा, प्लीज मैच। इट्स 15 by 4 minus 9 by 4, it become minus 9 by 4, and here you will get 3, and by using this R3 minus 3 by 4 R1, this is 0, this is 5 by 4, बेटा ये आप करना अभी तुरंत करो इसको, ठीक है, and this is minus 19 by 4, minus 19 by 4, okay, and the last one 3, प्लीज चेक बेटा, सभी लोग चेक कर लो क्या सही है ये, is it correct बेटा everyone? First stage completed, first stage completed. Now check in second, तो second में तो बहुत अच्छा लगा, in second you can see beta already 15 by 4 is the largest element in second column and at pivot place, no need to change or operate it again you can see here too beta, here too it is already in this place, but not now, अभी नहीं देखेंगे कि अपने प्लेस पे है, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ आई वॉन्ट 0 हियर, आई वॉन्ट 0 हियर, कैसे करेंगे 0, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, 5 by 4, आई वॉन्ट 0 हियर विदाउट डिस्टर्बिंग दिस वन। सो अभी जो द मैट्रिक्स यू वॉन्ट टू सी नाउ, नॉट 3 by 3, just see now this one 2 by 2, this one 2 by 2, why, because 0 minus 0 will give you 0,
0 plus 0 will give you 0. 0 minus 4 by 3 0 will give you 0. ओके, सो यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आएगा. हाँ, इसे बदलना पड़ेगा. ओके, इसे बदलना पड़ेगा. बट नाउ नो नीड टू ऑपरेट दिस बाय यूजिंग फर्स्ट रो. ओके, सो क्या करने वाले हैं यहाँ हम बेटा? what I am going to use here in place of R3, I am going to use, yes, absolutely correct beta, R3 minus 3R3 beta. R3 what is this? R3 minus 1 by 3 of R2 na beta Salesh. 1 by 3 of R2 na. 1 by 3, that means now you can see it is also converting into 5 by 4. 5 by 4 minus 5 by 4, it's 0. It's 0. Is it clear beta? इज इट क्लियर? यस, आपको एक्सपर्ट बना देंगे. अभी तो मैट्रिक्स पढ़ा भी ना रहे. जब मैट्रिक्स चैप्टर आएगा तो देखना आप. अभी बिना मैट्रिक्स पढ़ाई इतना कुछ समझा दिया आपको. ओके ओके बेटा, वेरी गुड बेटा. सो राइट हियर 4, राइट हियर 1, राइट हियर 1, राइट हियर 4. इट्स 0, इट्स 15 by 4, it's minus 9 by 4. Yes beta, you need not to use R1, because if you are going to use R1, then 0 minus 4, 0 plus 4 or 0 minus any a 4 will disturb this 0. वो इस 0 को disturb कर देगा. So you can't use now R1 here. ठीक है? हाँ, कैसे भी रो को इंटरचेंज कैसे करेंगे? रो को इंटरचेंज जैसे अगर ये नहीं होता, अगर ये अपने लार्जेस्ट प्लेस पे नहीं होता, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू इंटरचेंज. तब हम इंटरचेंज कर देते बेटा. समझ रहे? यहां पे ऑटोमेटिकली आ गया, वो ऑटोमेटिकली आ गया. दैट इज वाई नीड नॉट टू इंटरचेंज. अगर नहीं होता देन अगेन जैसे पहला वाला स्टेप किया वैसे ही आप फिर से करते. यस, ओके. एंड हियर 5 by 4 minus 15 by 4 into 1 by 3, it will also 0 become 0. And third one after calculation it will be minus 4. आप चेक कर लेंगे बेटा सभी लोग. प्लीज वेरीफाई, सभी लोग वेरीफाई कर दें. सो दिस इज my final upper triangular matrix. You can see this is my final upper triangular matrix. And this upper triangular matrix I got by using partial pivoting. Okay, by using partial pivoting. इसे हमने कैसे प्राप्त किया? By using partial pivoting. Now you can solve this to obtain the value of x, y and z. How? See here बेटा again. थर्ड में तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज आपका कंप्लीट हो गया एक्लन फॉर्म. अगर ये 4 by 4 होता, if this is 4 by 4 type, then one more stage required. Okay, now see here, first equation is 4x plus 1, that means plus y plus z becomes equals to 4. And second one, 15 by 4 y minus 9 by 4. 9 by 4 बेटा कमेंट अभी आपका ले रहे हैं, डोंट वरी, पढ़ रहे आपके कमेंट, बस ये लिख दें. एंड माइनस 4z इक्वल्स टू 2. अनिल कहते हैं सर आफ्टर इंटरचेंजिंग द R2 एंड R1 minus sign will also be there in outside. No beta, it's not matrix chapter. You are not going to solve a matrix here. You are not going to solve a matrix here. That is why हमने कहा ना, यहाँ matrix में pivot element is first element only, pivot point, pivot element. Here all diagonal elements are pivot element. Okay बेटा अनिल, सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं. ये दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर, दिस इज नॉट मैट्रिक्स चैप्टर. मैट्रिक्स में बताएंगे इफ यू आर गोइंग टू इंटरचेंज, तो बाहर में अंदर में क्या फर्क पड़ता है उनके डिटर्मिनेंट में. ओके बेटा, या नो 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 नो, यू नीड नॉट टू कंसीडर एनी नेगेटिव साइन आउटसाइड और इनसाइड. यू कैन सी हियर बेटा, यू कैन सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन. आप देख सकते हो यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को. सो बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वैल्यू कैन बी अ डिटर्मिनेंट. वहां पे आपका चेंज हो जाता है अगर कुछ भी आप ना करो चेंजेस. ठीक है, माइनस प्लस जो भी आप बाहर लेते हो कॉमन. तो मैट्रिक्स चैप्टर नहीं है, दिस इज न्यूमेरिकल मेथड्स चैप्टर. लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैप्टर्स. ओके, अभी केवल इस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे जो बता रहे हैं. मैट्रिक्स पे फोकस कर लेंगे. ओके बेटा, नाउ यू कैन सी बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, by solving
this equation number 3, the value of z 2 by minus 4, that means minus 1 by 2, same value, and by putting here you will get the value of y, and the value of y 1 by 2, and here after putting yz x, again you will get same value 1. So as I already told you beta, in your examination they are not going to ask you the value of x y z by Gauss-Elimination method. They can ask you x y z by Gauss-Seidal method only in your examination. By this they can ask you just convert this into echelon form or upper triangular matrix form by using Gauss-Elimination method. Okay beta, is it crystal clear to all of you? Is it crystal clear? मजा आया? Please tell me, everyone beta, everyone, is it crystal clear to all of you beta? Everyone enjoyed? Okay, very good. जी गुरु जी, ओके बच्चा जी, चलिए सो बेटा आज के लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं. ओके, एंड दिस इज ब्यूटीफुल होमवर्क. आंसर इज ऑल्सो देयर. आंसर आप यू कैन नोट डाउन आंसर. इट इज 3 to 1. x equals to 3, y equals to 2, z equals to 1. So solve this set of equations first by using Gauss-Elimination method without partial pivoting, and second again by using Gauss-Elimination method but with partial pivoting. इसे नोट कर लें एवरीवन बेटा. ऋषिकेश पूछते हैं why these different forms we need, instead we can solve equations easily. अब बेटा जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं आपको पता है. हर एक चीज़ को सॉल्व करने का हमारे पास ढेर सारी टेक्निक्स होती हैं, लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. ठीक है, उन सारी टेक्निक्स को आपको एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी सिखाया जाता है ताकि उसके आगे कहीं अप्लीकेशन करना हो. अब वन मोर थिंग, कल आपको बताते बट अभी बता दें, आप सारे इक्वेशन को सबसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम भी आएगी. लाइक ये दोनों आपको दीज टू मेथड विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर. ओके, बट दीज आर गोइंग टू गिव यू अप्रोक्सीमेट आंसर. अप्रोक्सीमेट, यहां से आपको क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है. एंड दीज विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर. कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स बनेंगे जिनको आप गॉस एलिमिनेशन से करने जाओगे तो करते रहोगे, इतने सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे कि आपको हालत खराब हो जाएगी, होगा ही नहीं वो. ठीक है, सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज गॉस सीडल और गॉस जैकॉब्स, बट एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको बता देगा एग्जाम में किसको इससे सॉल्व करने का है. ओके बेटा, सो किसी भी चीज को देखते हो यू हैव मोर देन वन पाथ. प्लीज नोट डाउन दिस वन बेटा as your homework, and tomorrow same timing 9:30 p.m. okay, tomorrow 9:30 p.m. and also beta numerical, pure numerical batch is going on where you can see all subjects numericals, and this time a beautiful offer is going on with huge discount. In YouTube it is written 5,999, but this time a beautiful Diwali offer is going on. That offer I'm not going to tell you here because limited period offer. That offer is limited period offer. So to know that offer you can call 9451707049, or you can WhatsApp me beta. You can call or you can WhatsApp to know your offer. Okay, and it's very convenient beta. बहुत ही कम में आपको प्योर न्यूमेरिकल मैच मिलेगा और बहुत उसमें मज़ा आएगा. अभी उसमें वापस से अभी 25 के आसपास लेक्चर हो भी गए हैं, एंड अभी उसमें और बहुत सारे लेक्चर्स लगातार लगने वाले हैं. ब्यूटीफुल न्यू न्यूमेरिकल्स, मज़ा आने वाला है. ओके, यू विल एंजॉय अ लॉट. दे आर ऑल्सो द मेन लैंग्वेज इज इंग्लिश बट सपोर्टिंग. अगर आपको कभी इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम्स इन हिंदी टू. ओके बेटा. अनिल कहते हैं सर श्रिंकिंग कोर मॉडल इन सीआरई सेकंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेट सिलेबस. नो बेटा, श्रिंकिंग कोर मॉडल इज नॉट प्रेजेंट इन योर गेट सिलेबस. वो गेट सिलेबस में नहीं है बेटा अनिल. ओके, एनी मोर डाउट और गुड नाइट कर लिया जाए.
And also, beta, don't forget to revise every day. I must do my revision daily. 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 If you want rank 1, rank 100, or any rank between 1 to 100. So revision is the only key जिससे आप इस रैंक को प्राप्त कर सकते हैं. ओके बेटा. सो वेरी हैप्पी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. आई एंजॉयड अ लॉट टुडे. आपके साथ बहुत दिन के बाद मिले आज यूट्यूब पे लाइव. आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 मंथ्स एगो हम लोग मिले थे, बट अभी लगातार मिलने वाले हैं आपसे. ठीक है. कुछ बच्चे कहते हैं सर आप केवल एग्जाम के टाइम में आते हैं फरवरी में, तो देखो फरवरी के पहले भी अक्टूबर में ही आ गए. ठीक है. ओके सर, व्हेन यू आर कमिंग दिल्ली. देखते बेटा इस समय थोड़ा सा अभी तो हम दिल्ली में थे. दिस टाइम आई एम ओपनड अ ब्यूटीफुल गैराज इन दिल्ली. ठीक है. सो दैट इज़, आप वहाँ पे आना. अगर किसी को एड्रेस चाहिए होगा बताएंगे. वहाँ पे हम आते रहते हैं. वहाँ पे भी अभी गए थे. अभी वापस से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के बाद फिर से जाने का होगा. सो इफ़ यू आर इन दिल्ली यू कैन मीट मी इन दिल्ली. ओके. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. एनी वन हु वांट टू व्हीलर सर्विसिंग, ब्यूटीफुल सर्विसिंग. ठीक है. यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप इन दिल्ली ओनली. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा. बट डोंट फॉरगेट अगेन टू रिवाइज एवरी डे. ओके बेटा शैलेश, आते हैं जल्दी. दिल्ली में आते हैं जल्दी आते हैं. ठीक है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स के साथ जल्दी मिलते हैं. ऑल द बेस्ट बेटा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो 9:30 PM विथ कल हम तीनों ही मेथड डिस्कस करेंगे. टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अदर 3 methods: Gauss-Jordan, Gauss-Seidal, and Gauss-Jacobs. After that, one day after tomorrow, numerical methods. No, sorry. Yeah, algebraic and transcendental equations solutions. That is Newton-Raphson method with convergence, everything. Okay, Newton-Raphson, secant, regular falsy, bisection, every method I will discuss in detail in very less time, but with full content. Okay, beta. So all the best, beta. Again, and a very happy good night to all of you. You are all welcome, beta. You are all welcome. And beta, लेक्चर के लिंक को शेयर कर दिया करें अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें. टुमारोज लिंक हम अभी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देंगे इन टेलीग्राम. ओके, ऑन टेलीग्राम. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. मिलते हैं आपसे बेटा. यू आर ऑल वेलकम अगेन.